Good morning, students. Today I am going to discuss about bioreactors. Students, actually bioreactors are large-sized vessels in which we can cultivate the desirable cells, means the host cell which we have formulated through genetical engineering or through rDNA technology, and finally we are going to culture them in these vessels, as well as we are obtaining different kinds of product from them. So I am going to discuss in detail right now. So we can say that bioreactors are the large volume vessels, approximately 100 to 1000 liter, in which raw materials are biologically converted into the specific products. Means the bioreactors are large sized vessels, and approximately their bearing quantity is 100 to 1000 liters, and in these vessels or inside these vessels the raw materials are biologically processed, and these raw materials are converted into specific products, and these specific products must be different kinds of enzymes, and we can use different kinds of microorganisms for processing, as well as we can use animal cells, human cells, or plant cells too. So in other words, we can say that these bioreactors are large sized vessels in which different types of raw materials are used, and they are processed under a recombinant cell or a genetically modified cell. This cell may be microorganism, this cell may be plant, or this cell may be animal cell or human cell, and these products are used, and these are converted into various products of our desire. A bioreactor provides optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth conditions like temperature, pH, substrate, salts, vitamins, and oxygen. So in other words, we can say that bioreactor is a kind of vessel which, or it is a kind of instrument which is used to provide optimum condition for achievement of desirable product. What are these optimum condition? I am telling you that optimum condition can include optimum growth condition like temperature, means it maintains optimum temperature for the most of the biochemical activities inside the cell, and which are going to synthesize more and more amount of the product. It also provides optimum pH. It also helps to utilize in utilization of maximum amount of the substrate, salts, vitamins, and oxygen. Okay, in detail I will discuss how these bioreactors are going to function and what is their structure. Now you are observing here in the figure. Here in the figure there are two different types of bioreactors. So one by one I will explain about each and every one. So initially I am talking about bioreactors. So I am telling you the cells can be multiplied in a continuous culture system inside a bioreactor, and in this the used medium is drained out from one side and the fresh medium is added from other side of the bioreactor to maintain cell in their physiologically most active or exponential phase. So if you will see the picture, so in this picture you are observing, in the A picture, picture number A, you are observing there is a vessel, ठीक है, which is a kind of bioreactor, and in this bioreactor you are observing the maximum amount of cells, means cells which are undergoing different processes to provide different products. ठीक है, these cells are uh, from, there are two openings. From one opening we can input the cells inside the bioreactor, and from one end we can release these cells from the bioreactor, or we can drain out these cells. So here it is already mentioned, in a bioreactor the used medium is drained out from one side, and the fresh medium means the medium in which the cells are going to culture, means एक साइड से हम फ्रेश मीडियम को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और एक साइड से हम जो आपका यूज्ड मीडियम है उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से कि जो सेल्स हैं वो मोस्टली अपनी एक्सपोनेंशियल फेज पे रहें, यानी ग्रोइंग फेज पे रहें, ठीक है, मोस्टली एक्टिव फेज पे रहें. दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ बायोमास लीडिंग टू द हायर यील्ड ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन. तो ऐसा करने से अगर मीडियम प्रॉपर मिलेगा तो जिस सेल को भी हम उसके अंदर कल्चर कर रहे हैं
वो सेल अब मैक्सिमम यानी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी और खूब सारा अपना नंबर बढ़ाएगी। अगर उनका नंबर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उनसे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। द कंपोनेंट ऑफ ए बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर के पास क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? देयर इज़ वन एजिटेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, a foam controller system, a temperature controller system, pH control system, and a sampling port from where after a fixed duration of time we can take out some sample and we can check either the culture is functioning actively or not. So there are different system as I mentioned earlier. Agitator system is there, ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज़ देयर, फोम कंट्रोलर सिस्टम इज़ देयर, टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम इज़ देयर, पीएच कंट्रोल system is there as well as a sampling port is there. Now in this picture you can observe all of these, ठीक है. This here it is mentioned that cultural board and a flat bladed impeller जो घुमाने का काम करेगा, ठीक है, and acid base for pH control. Here you are observing there is a motor which is rotating this agitator, ठीक है, एंड फोम ब्रेकर, फोम को ब्रेक करने के लिए फोम ब्रेकर भी इसके पास है, ठीक है. फ्रॉम हेयर वी कैन रिमूव द स्टेराइल एयर, ठीक है, एंड देयर आर वेरियस सिस्टम्स विच आर प्रेजेंट इन दिस बायो कंट्रोलर, ठीक है. नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टायरिंग टाइप. तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लाया जाता है उसको स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर बोलते हैं. एंड स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. तो ये स्टायरिंग टाइप जो बायोरिएक्टर हैं ये दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका सिंपल स्टायरिंग टैंक बायोरिएक्टर एंड दूसरा जो होता है स्पार्स्ड स्टायर्ड टैंक bioreactor. So now what is the difference between these two? I am telling you that initially I am talking about a simple stirred tank bioreactor. It is usually cylindrical in shape and having curved bases to facilitate even mixing of reactor component. तो you can observe here. तो ये आपका जो पहला देख रहे हैं आप सिंपल स्टायरर बायोरिएक्टर है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है और इसका जो बेस है वो कर्व है जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में मीडियम क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है. While the second is called sparged stirred tank bioreactor, it facilitates the mixing of component and ensures the oxygen availability throughout the bioreactor. तो sparged का मतलब यहाँ पे होता है कि जो गैसेस को फ्लश करने वाला होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये सिंपल की तरह फंक्शनिंग तो करता ही करता है, बट इसके साथ में क्या होता है, इसमें हम ऑक्सीजन को फ्लश कर सकते हैं बीच बीच में, जिससे कि पूरे के पूरे बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बने रहे, ठीक है. द sparged stirred tank bioreactor also facilitates the mixing of the component as well as ensures the oxygen availability throughout the bioreactor. Alternately, air is bubbled through the reactor. और alternate time interval के बाद क्या किया जाता है, इसमें एयर को बबल किया जाता है, ऑक्सीजन को बबल किया जाता है, ठीक है, विच स्टायरल एयर बबल्स आर स्पार्स्ड, ठीक है. तो इस तरह से बायोरिएक्टर में इसको तैयार किया जाता है. नाउ लास्ट स्टेप इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस. नाउ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, after completion of the biosynthetic phase, once the cells are functioning properly and they are forming the products in the maximum amount, now the products are ready for the processing and finally marketing process. Now तो सबसे पहले मार्केट में लॉन्च करने से पहले वी हैव टू गो फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है. एंड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है. एंड दीज टू स्टेप्स आर कम्बाइंडली कॉल्ड एज और कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस. तो कहने का मतलब है कि तो आपका सबसे पहले क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है, सेपरेशन के बाद प्यूरिफिकेशन किया जाता है. यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपको मीडियम में मिलेंगे आप उनको सबसे पहले सेपरेट आउट करोगे, सेपरेट आउट करने के बाद उनको प्यूरीफाई करोगे और प्यूरीफाई करने के बाद तब जा करके उनकी क्वालिटी टेस्टिंग करोगे कि किस क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं. देन यू कैन गो फॉर द मार्केटिंग, ठीक है. द प्रोडक्ट देन सब्जेक्टेड टू द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग. द प्रोडक्ट आपने ऑब्टेन कर लिए, सेपरेट कर लिए, आइसोलेट कर लिए, प्यूरीफाई कर लिए, देन उसके बाद आपने उनकी क्वालिटी कंट्रोलिंग टेस्ट किया, ठीक है. देन क्वालिटी कंट्रोलिंग टेस्ट करने के बाद आपने उसको फॉर्मुलेटेड कर लिया और प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करके प्रोडक्ट को आपने स्टोर कर लिया. एंड आफ्टर स्टोरिंग देम यू कैन चेक or you can go for the marketing process. Now the downstreaming process and the quality control test is different for different kinds of products. यानी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ को हमें यूज़ करना पड़ता है. So I am concluding myself here. This chapter completes. I hope so you understood the chapter very well. Still if you have any query please ask. Thank you. Bye bye.